سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. So we started Ismul Mubalaghati and we are going to complete this topic today inshallah. And you know that Ismul Mubalagha is from Ismul Fa'il, but it intensifies the meaning. It increases, enhances the meaning of Ism Fa'il. So that's why it is Mubalagha. Mubalagha means to add more meaning to something. So we learned some of the Ozan in our previous the last lecture that was on Ismul Mubalagha. So this is what Ismul Mubalagha we did in our last before the exercise session. So I repeat the definition for you. Ismul Fa'il wa Ismul Mubalagha. What are the differences? Ismul Fa'il does not describe the meaning of the subject with respect to scarcity, lacking or abundance or weakness or strength expressly. Means even it does not intensify nor it lessen the meaning, brings, what should I say, less meaning to the word. It is a norm, it gives the more normal meaning, but expresses only normal or regular or normally accepted meaning. However, Ismul Mubalagha describes extreme or abundance in the meaning. Like we were having examples. Hamidun katibun durusahu. Hamid apne asbab ko likhne wala hai. Hamid is a writer of his lessons. But we want to bring some intensified meaning to this ism, then it would be Hamidun kattabun durusahu. Hamid apne asbab ko bahut likhne wala. Hamid is extreme writer of his lessons, right? So we learnt about some uh, scales, awzan, like fa'alun, fa'ulun, fa'ilun. These were the three awzan we discussed. Today we are going to discuss more awzan, like fa'ilun. This is also wazan, one of the wazan. One of the wazan like fa'ilun, maziqun. You know, बहुत टुकड़े करने वाला. One who is extreme cutter into pieces. Extreme cutter. Maziqun. Then kadhibun. Extreme liar. बहुत झूठ बोलने वाला. Fatinun. Extreme intelligent or extremely intelligent. Nihayat zahin fatin. Hadirun. Extreme cautious. Nihayat bachne wala. Nihayat muhtat. So this was the wazn of fa'ilun. Mif'alun, like scales of and the scales of mif'alun. Minsarun, extreme helper. Bahut madad karne wala. Miqtan, qata, it comes from qat'un. Qatiya yaqta'u, means to break down, break into pieces or break the relationship. Bahut kaatne wala, extreme breaker, extreme cutter. Misma'un, bahut sunne wala, extreme listener. Mihdarun, again the meaning of hadirun, extreme cautious. Bahut bachne wala, intahai muhtat. Now these were the we can say Kiasiyun, Auzan Kiasiyun, scales Kiasiyun, that we have some rule to make some Ozans
And other are sama'iyun scales. Those were means heard from Arabs. I'm not going to give you all of them, but some of them, like fu'ulun, this is samai, quddusun, extreme sacred, nihayat or ya bahut pak, fu'ulatun, faw, mazmum, ain maftu, la maftu, ta mudawwira, humazatun. If you remember the verse of the Quran, wailul likulli humazatil lumaza. बहुत ऐब निकालने वाला, one who means extreme finder of errors, extreme judge of other personalities. Okay, humazatun, fu'alatun. Then there is was enough fu'alun, ain mushaddad and maftuh, qullabun, बहुत पलटने वाला है, extreme U-turner, extreme turner, who is not a regular. He keeps on changing his mind. He keeps on changing his stance. He keeps on changing whatever he does. Fa'ulun, this is qayyumun, you know, because the ya is majzoom, and the after ya that is what mazmum. So there will be the gham because there are two ya. So qayyumun. Fa'ulun qayyumun. Extreme safeguarder of many means everything. One who safeguards everything extremely. सब चीजों की हिफाजत और निगरानी करने वाला. Then we have got fu'alun, fu'alun, ujabun. बहुत अजीब, extreme strange. फुआलुन now मुशद्दद आइन, कुब्बारुन, बहुत बड़ा है, extremely large or extremely highest in the status. Then fi'ilun, fi'ilun, siddiqun, extreme truthful or extremely truthful, बहुत सच्चा. Then fa'ulun, faruqun, extreme distinguisher or extreme in distinguishing something between the right and the wrong. Faruq bahut farq karne wala. Then we have got fu'alun, sorry, fu'alatun, sorry, fa'alatun, allamatun, bahut bada alim, extreme scholar or extremely knowledgeable. Now remember, if there is a Thai mudawwira, it does not mean that in ism mubalgha there is a difference between male or feminine and masculine gender. No. That ties also means intensifies the meaning. Alama and allamatun, because of Thai mudawwira, there is what? Enhanced meaning. Now I can give you some of the examples from Quran, and if you have some means you can find those examples, you should work hard on them as well. Some of the examples from Quran, and I will definitely ask you, just telling you, not giving you the examples means in writing, because I want you to find out your examples as well. Like you have means everybody must have listened to this verse. وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ. Now, qaribun is on scales of, remember? Fa'ilun. Fa'ilun. Very good. If I say rajulun alifun, on what, on oh, what if scales? The same, fa'ilun. Milhaqatun jadidun. Fa'ilun. And milhaqatun, what does it mean? Spoon? No. Milhaqatun jadidun.
बहुत नई चादर। चादर। रीहुन हरीकुन, सॉरी रीहुन खरीकुन। फ़ाइलुन। फाइलुन। नुकसान। ओके, वकान अल्लाह गफूर रहीमा। फ़ाइलुन। व इन्नी लगफ्फारुन। फ़आलुन। फ़अालुन। इन्न फी Ustad, I have ज़ालिका a लायातिन question. लिकुल्लि सब्बारिन शकूर। فعال. Sabbarin shakur. Fa'alun and fa'alun and फ़ाउल। fa'ulun. Yes, both. Ustad, I have a question. Yes, please. ये एक्सट्रीम मतलब बहुत बड़ा मीनिंग बता रहे हैं, मोर बता रहे। तो ये जो हमने अफ़आल सीखे थे ना कि असगरू मतलब कबीर अकबर, हम्म, तो वो बड़ा है कि ये बड़ा है? ये बड़ा है ना। अच्छा, ये दोनों में ये फर्क है ना। अकबरू दैट हम्म इज इसम तफजील, हाँ और ये इसम मुबालगा है। मुबालगा मीन्स अपनी मीनिंग में जो उसकी असली मीनिंग होती है उसको बढ़ा चढ़ा के पेश करना। से फॉर एग्जाम्पल, सारे इंसान है ना, हम्म मगर कुछ लोग होते हैं जी, ये कब्र में जाके बंदा सुनने शुरू हो जाता है, कब्र वाले से मांगते हैं। जी ठीक है ना, ये मुबालगा। ऐसे हम्म मिसाल के तौर पर ये यानी कि वो मुबालगा सिर्फ अंडरस्टैंड करने के लिए, इनमें तो कोई हकीकत नहीं है कि ये बंदा जो है ना वो होता यहाँ है, नमाज जो है मस्जिद नबवी में पढ़ रहा होता है। ऐसी बातें हम्म अजीब सुनने में आती है ना। जी मुबालगा करना किसी यानी उसकी तारीफ में, उसके किसी फेल को करने में, उसको बढ़ा चढ़ा के बयान करना, इसको कहते हैं मुबालगा, इंटेंसिफाई करना। हो सकता है कि हमारे जो इंग्लिश वर्ड्स हों हम इसको फिर रिविजिट भी करेंगे, नो इश्यूज इन दैट। और आप उसकी मीनिंग अगर आपको यानी मैं तो एक्सट्रीम कर रहा हूँ इस वक्त, मगर वी विल रिविजिट। अगर आप इसको और मीनिंग यानी कि वी आर इंटेंसिफाइंग द मीनिंग, जो अच्छा उनमें माना पाया जा रहा है, वी आर exaggeration. There is exaggeration, exaggerating the meaning. जी There is a word excess, I think, that is also used. जी उस्ताद। जी सिस्टर, इसम तफजील हम इंशाल्लाह उसको भी डिस्कस करेंगे। इसम तफजील, when we talk about इसम तफजील, we are comparing, उसमें कंपैरिजन होता है। जी जी इसमें जी दूसरे से कंपेयर नहीं किया जाता, इसकी अपनी मीनिंग में बढ़ावा होता है। Do you understand this thing, the difference? हाँ 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 अच्छा अच्छा हाँ हाँ जैसे हाँ एडजेक्टिव की डिग्रीज होती है ना, एक हाँ होती है हाँ पॉजिटिव डिग्री, एक होती है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री दो के दरमियान, और सुपरलेटिव होती है जो सबसे आला। मिसाल के तौर पर, जी अहमद इज बेटर रनर देन अली, से फॉर एग्जाम्पल। जी बट जी वी हम ये भी कह सकते हैं कि मोहम्मद इज द बेस्ट ऑफ ऑल। अब वो हम्म दो के दरमियान कंपैरेटिव डिग्री जब हम यूज करते हैं तो उसमें दो को बिटवीन, और जी बेस्ट ऑफ ऑल यानी सबसे बेहतर। तो इसी तरह से तफजील जो है फजीलत बयान करता है एक से दूसरे कंपेयर कर रहे हैं में, दो के दरमियान, राइट। जी 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 और इसकी जी क्या मीनिंग है, इसकी अपनी मीनिंग में थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के बढ़ा के बताना एग्जेजरेट ठीक करके बयान की जाती है मीनिंग। ठीक इसको ठीक किसी और ठीक से कंपेयर नहीं किया जा रहा। नहीं किया जा रहा ओके ओके अब कुद्दूसुन, इट डज, हम अल्लाह के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। हम्म अब अल्लाह की जात यानी उसकी सिफत तो किसी के साथ ये नोबडी कैन मैच। कंपेयर नहीं हो सकता तो बहुत ही ज्यादा पाक, यानी पाकाई में इंतहाई पाक, exaggeration, even we cannot think of that। और समझ में आ रही है। अफआलुन कुब्बारुन, यानी जैसे डेविकल बहुत ही बड़ा, उसकी बड़ाई में एग्जेजरेशन है, कंपैरिजन नहीं है। फ़अीलुन सिद्दीकुन, इंतहाई सच्चा, यानी कि अबू बकर सिद्दीक को ये लक़ब दिया गया। और आपको पता है कि जो चार दर्जे हैं कि अंबिया
सिद्दीकीन, सालिहीन व शुहदा। तो यानी सिद्दीक यानी कि बंदा इतना सच बोलता रहता है कि इंतहाई सच्चा हो जाता है, यानी झूठ का शायबा नहीं होता उसको। अगर हम ये कहें कि अस्दको, तो वो तफजील हो जाएगा, अस्दको, उस दो में कंपैरिजन आएगा। जी जी, और कोई जज़ाकल्लाह सवाल? No. So have you been solving the sigas? यस उस्ताद। Okay, please keep on doing that. And remember, means try to memorize this. Now we have finished this topic of Ismul Mubalagha. We'll means start new discussion of new topics, inshallah tomorrow with the grace of Allah Almighty. But do please solve these sigas as soon as possible. And once we are going to learn all these concepts, go through the concepts, we'll inshallah go for the exercises, right? And also stick to your gardans as well, right? Till tomorrow, inshallah. यस इंशाल्लाह। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله. वालेकुम सलाम। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.